hello everyone. So today we have a new problem which name is power set. So let's read the problem statement. Given a string of length n, find all possible subsequences of string s in lexicographically or sorted order. Okay. So let's read the example one. String we have given this string s equals to abc. So we have to find all subsequences of abc like a, then ab, then abc, then ac, then b, then bc, then c. So total number of subsequences that can be created using string abc is 2 to the power n, because we know that the if we have given n length string, so total number of substrings that can be created using n length of string is 2 to the power n. So here n equals to 3 because the length of the string is 3. So 2 to the power 3 equals to 8. So total 8 number of strings can be created using substrings can be created using this string. So here we have written this the total 7 number of sequences possible. 7 why 7 not 8, because in 8 subsequences substrings there is a empty substring also. So empty substring is not included here. So that's why total number of substring is 7 here. So these are the total number of substrings, the A, B, C like this. Okay. So if S equals to A, then it can be then 2 to the power 2 equals to 4. So empty substring को हटा के कितने बचेगा 3. So then A. So let's see the example for this. If I want to create this subsequences, so these are my subsequences. So what will be the approach for this? Let's see the approach. Okay. So if I want to write 5 in binary number, so in binary it can be written as 101. Okay, it is a zeroth index, it is a 1th index, it is a second index. Now I want to find here which index is my set index, set bit. Means check if any given ith bit set or not. Like if this bit is set, this bit is not set, this bit is set. Now I want to check like which index is set or which index is not set. So what will I do is, if we have given this number 101, I want to check this bit. Here I have seen that this bit is set, but computer doesn't know this bit is set or not. So what computer will do is कि जो भी बिट सेट करनी है ना उसको वन मान के सबको जीरो कर लो और उसका एंड करा दो. ठीक है. आई वांट टू चेक दिस बिट. नाउ व्हाट आई विल डू इज इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो बिट है ना उसको मैं बंद कर दूंगा और सारी बिट को जीरो कर दूंगा और उसका एंड करा दूंगा. एंड करने के बाद क्या बचेगा 100 0 0 0 और 1 1 1. सो ये वाली बिट क्या बची 1 which is not equal to 0. It means it is a set bit. So here what I have done is I have shifted one left, two left shift actually. I have shifted two left shift. Now I want to check this bit. This bit is set or not. So how will I set? I'll set the corresponding bit of this to one, and other bits will be zero. Now I will add. I will end these two. Then 1 0 0, then 0 1 0, then 1 0 0, which is equal to 0, not set. It means the bit is not set. ओके. सो व्हाट आई हैव डन इज हमने एक बार लेफ्ट कराया है. ठीक है इसको. नो इफ आई वांट टू चेक द ith बिट. ith बिट को कैसे चेक करूंगा? जो n है मेरा नंबर है ये उसको एंड कराना पड़ेगा वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ith टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर सेकंड बिट चेक करी थी तो सेकंड दो बार लेफ्ट शिफ्ट कराया था. यहाँ पर फर्स्ट बिट चेक करी थी एक बार लेफ्ट शिफ्ट कराया था. अब मैं ith बिट शिफ्ट कर रहा हूँ तो वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ith. And I'll check if this whole thing is not equal to 0, it means that bit is set. Okay. So now let's see the example. So we have given this string s equals to abc. So abc is scale. This is string. Okay. So total number of substring that can be created using ABC is to the power n, which is 8. So 0 to 7 times we will run the loop and I will check जीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये 0 0 0 होता है. सो 1 का ये होता है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको लिख दूंगा. ठीक है. नाउ आई विल चेक these bits are important, these indexes are important, 0 1 2 and here 0 1 2. लाइक यहाँ पर तीनों जीरो है. जीरो मीन्स नॉट पिक, वन मीन्स पिक. ओके. जीरो तीनों जीरो है तो एम्प्टी मीन्स कुछ भी पिक नहीं करूंगा. ठीक है. यहाँ पर वन है. जीरो थे
जीरो इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वन है, तो जीरो इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे ए, तो ए को ले लूंगा। यहाँ पे बंथ इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वन है, तो बंथ इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना आ रहा है बी, बी ले लूंगा। यहाँ पे वन और जीरो दोनों इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग क्या है, वन है, सॉरी ये वाला, दोनों इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वन है, तो दोनों इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग ले लूंगा, ए बी ले लूंगा, ऐसे ही सारी स्ट्रिंग्स को ले लूंगा। सो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, लूप लूप देख लेते हैं कैसे लूप वर्क कर रहा है। ठीक है, सो एक लूप रन करूंगा जो कि नंबर होगा जीरो टू 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 पावर एन माइनस वन, टू पावर एन कैन बी ग्रेटर एज वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ एन। सो टू पावर एन माइनस वन टाइम्स क्यों, ये वाला चीज कि एक बार ये वाली चीज ले लूंगा, और अब मैंने ये वाला लिख दिया नंबर जीरो टू टू पावर एन माइनस वन टाइम्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ सब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लूंगा एंड एक लूप रन करूंगा आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टाइम्स, ये वाली चीज। अब एक एक ये वाला उठा लिया मैंने, जीरो उठा लिया, अब इस वाली स्ट्रिंग को लूंगा, ठीक है, जीरो टू एन माइनस वन टाइम्स एंड चेक करूंगा नंबर एंड ऑफ वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, ये वाली चीज कि ith बिट सेट है या नहीं है, कौन सी बिट सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो उसको ऐड करते जाऊंगा, और बाद में प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन इज, here you can see this loop is working 2 to the power n times and this loop is working n times and these are nested loops, so time complexity will be big 2 to the power n into n, and the space complexity will be big of 1 because we are not taking any space, external space. So let's do the code for this. So for coding part what I will do is, firstly I have to create a answer vector because I have to store these all strings in vector. So vector string answer. So I have created this. Now what I will do, I will apply a loop for int number equals to 0 to num less than 2 power n. 2 power n can be written as 1 left shift of n times, ठीक है, n I प्लस प्लस, 2 पावर n माइनस वन था, बट मैंने यहाँ पे नम लेस देन ले लिया है, लेस देन इक्वल टू लेता तो माइनस वन कर देता, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू इज स्ट्रिंग टेम्प, एक टेम्परेली स्ट्रिंग ले ली मैंने, ठीक है, इक्वल टू जो कि नल पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ आई विल अप्लाई अ लूप। अब मैं अभी तक मैंने क्या कर चुका हूँ, मैं ये वाली चीजें क्रिएट कर चुका हूँ, जीरो टू टू पावर एन माइनस वन टाइम्स ये वाली चीजें क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं एक एक चीज लूंगा, जैसे मैंने जीरो ले लिया और जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जीरो जीरो जीरो, तो इसको ले लूंगा, इसमें चेक करूंगा कि सेट बिट है या नहीं है, सेट बिट है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। सो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो टू आई लेस देन, सॉरी आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस, एन तो डिफाइन किया ही नहीं, डिफाइन कर देते हैं एंड एन इक्वल टू, सॉरी एज डॉट साइज, ठीक है। सो आई हैव डिफाइंड दिस एन एंड अब क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ नम एंड वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, सॉरी वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, अरे यार, हाँ, if this condition holds, now in that condition what I will do is one left shift of I कर दिया। अगर ये कंडीशन मेरी सेट हो जाती है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट मीन्स दैट इट इज सेट। सो इन दैट कंडीशन व्हाट आई विल डू, टेम्प प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई, उसको ऐड कर दूंगा, और फाइनली जो है ना ये वाली सेकंड लूप है, इस लूप के बाद इफ मैं चेक करूंगा इफ टेम्प डॉट साइज is greater than 0, if temp dot size is greater than 0, that in that case what I will do, answer dot pushback of temp, temp को आंसर में डाल दूंगा और फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर। एक चीज की कमी है इसमें, बताऊंगा मैं क्या कमी है। लेट्स कंपाइल एंड रन दिस कोड। या सॉरी इट शुड बी num 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 numpy। So 4 int I equals to num equals to 0 to, so I was not declared here, okay, so actually this should be one left shift of n, because 2 to the power n can be written as one left shift of n,
here num is less than I was not declared। अरे यार क्या कर दिया, यहाँ पे भी num होना चाहिए था, कुछ भी लिख देता हूँ। हाँ, तो अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या बनी, मेरे एक्सपेक्टेड, मेरा आउटपुट क्या है, ए बी सी, ए सी बी सी ए बी सी, बट एज यू कैन सी आउटपुट इज सेम, ठीक है, but it is not in correct order। So for order what I will do, I'll sort this answer dot begin comma answer dot end। So now I have sorted this। Now let's compile and run, because मैं बताऊंगा उसमें लिखा हुआ था कि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में देना है मेरे पास। नाउ इट इज करेक्ट। लेट्स सबमिट दिस। सो एज यू कैन सी हियर इट इज वर्किंग परफेक्ट। सो मैंने सॉर्ट क्यों किया बताऊं, because as you can see here string should be in lexicographically order, so that's why I have sorted it, otherwise it will work perfect, but यहाँ लिखा हुआ था lexicographical order में, इसलिए sort कर दिया, ठीक है। So this was the complete code, and time complexity and space complexity I have discussed, and if you have another approaches you can comment, okay। So